हेलो स्टूडेंट्स आपण समस्त मोर यही मास्टर सीरीज क्लास प्रोब्लेम्स बेस्ड ऑन एजेस को स्वागत मु होची आपणकर सही प्रवीण सर बा विषय सर आपण माने देखुछंती मोर सही यूट्यूब चैनल स्टार्ट विथ पीवी सर। अच्छा स्टूडेंट ताले चलंतु जिबा आज हमर ए जो चैप्टर प्रोब्लेम्स बेस्ड ऑन एजेस सेथरे आउ किछि न्यू वेराइटी रो बा न्यू टाइप रो क्वेश्चन हमें सॉल्व करिबा। ताले चलंतु जिबा देखिबा आज रो वीडियो रे हमर केउ प्रकार क्वेश्चन सब अछि। क्वेश्चन नंबर 6 if 6 years are subtracted from the present age of Ranadhir and the remainder is divided by 18, then the present age of his grandson Anup is obtained. If Anup is 2 years younger to Mahesh, whose age is 5 years, then what is the age of Ranadhir? अच्छा स्टूडेंट्स याकु मो गोटे इक्वेशन माध्यम लिखुची अनुपर एज होची कौन ना रणधीर एज रु जदि आम 6 इयर सब्ट्राक्ट करवा रणधीर एज रु आम जदि 6 इयर सब्ट्राक्ट कले जहाँ सब्ट्राक्शन पर जहाँ वैल्यू आसला ताकू जदि आम 18 द्वारा डिवाइड करवा ताले ताहा ही जीवो कौन ना अनुपर एज। अच्छा से किंतु कही कौन ना अनुप इज 2 इयर्स यंगर टू महेश। अच्छा महेश रो वर्तमान एज होची 5 इयर्स महेश रो वर्तमान एज होची 5 इयर्स और अनुप होची कौन ना महेश टू 2 वर्ष सान 5 माइनस 2 सो दैट इज इक्वल टू 3 इयर्स। अच्छा आम अनुपर एज 3 वर्ष बोली जानी ताले 3 इज इक्वल टू आर माइनस 6 divided by 18. This implies r minus 6 is equal to 3 into 18 हेले से केते हिजो ना 54. This implies r is equal to 54 plus 6, so that is equal to 60 years. r बा रणधीर प्रेजेंट एज हम 60 इयर्स ताले एठी आमर ऑप्शन 4 टी होची राइट आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स ताले चलंतु जिबा आजिर ए वीडियो रो नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 the ages of A, B and C together total 185 years. B is twice as old as A and C is 17 years older than A. Then the respective ages of A, B and C are excuse me। अच्छा एठी से देइछि कोन ना A plus B plus C is equal to 185 years. B is twice as old as A. B is equal to 2A. And C is 17 years older than A. C is equal to A plus 17. अच्छा जदि आम ए दुईटी वैल्यू बी आउ सी रो वैल्यू आम इक्वेशन में पकई दवा ताहले ए जगह ए रहिला बी पई आम लिखि परिबा 2a ये होछ हमर बी पई 2a ये हला ए
ये बी पाई आउ सी रोचे कौन ना ए प्लस 17 a plus 17 so that is equal to 185 that is equal to 185 so this implies 4a plus 17 that is equal to 185 this implies 4a is equal to 185 minus 17. So this implies 4a is equal to 168. This implies a is equal to 168 by 4 so that is equal to 42 years आम ए रो पाई गले 42 years ताहले आम एठी लिखि दबा ना एठी से देछि कोन ना b इज इक्वल टू 2a आम a रो पाई 42 ताले b इज इक्वल टू 2 into 42 so that is equal to केते ही जाउची 84 b रो एज हे गला हमर 84 इयर्स और c रो वैल्यू होची कोन ना 42 plus 17 so that is equal to हे जिवो केते ना 59 इयर्स ताले a रो एज हमें पाइले 42 इयर्स b रो एज पाइले 84 इयर्स और c रो एज पाइले 59 इयर्स ताले एठी हमर ऑप्शन 2 टी होची राइट आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स वीडियोटी जदि आपण मानको भल लागिला ताले प्लीज याको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।